Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In previous lecture, we have discussed that what is the network layer security protocol. Specifically, we have seen that very famous protocol that is IPSec. In IPSec protocol, we have seen that what are different operations of IPSec protocol, in which we have seen that what is IPSec communication and internet key exchange. And we have also discussed that what is the tunnel and transport mode for using the IP security protocol. So आपको ये समरी याद होगी जो प्रीवियस क्लास के अंदर भी हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल मौजूद हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कौन से हैं और नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन है। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा कि आईपी सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल है उसका आर्किटेक्चर क्या है। हमने ये देखा कि इसमें दो इसके एक्सटेंशन हेडर होते हैं, जिसमें एक का नाम था ऑथेंटिकेशन हेडर और दूसरे का नाम था इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड यानी ईएसपी। तो आज का हमारा लेक्चर इन दोनों ही के बारे में है। हमने ये देखना है कि दोनों जो हेडर्स हैं उनका आर्किटेक्चर क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसमें हमारे पास दो तरह के मोड होते हैं। एक को हम टनल मोड कहते हैं और एक को हम ट्रांसपोर्ट मोड कहते हैं। जिसमें अगर हम ट्रांसपोर्ट मोड की बात करें तो वो हमारी होस्ट से होस्ट कम्युनिकेशन कराता है, और अगर हम टनलिंग मोड की बात करें तो वो होस्ट टू गेटवे और गेटवे टू गेटवे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोनों जो मोड हैं उनके लिए हम ऑथेंटिकेशन हेडर या ईएसपी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो मेजर मेजर ऑपरेशन है आईपी सिक्योरिटी में, वो ना सिर्फ हमारे पास जो है वो इंटरनेट की एक्सचेंज है, बल्कि कम्युनिके आईपी जो सिक्योरिटी की कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन चैनल को क्रिएट करना और उसको सिक्योर करना भी इसका हिस्सा है। सो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है। ये दैट इज फॉर क्विक रिवीजन। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो होस्ट से गेटवे जो है वो अनइनक्रिप्टेड होता है, लेकिन गेटवे टू गेटवे के अंदर इनक्रिप्टेड टनल है। और हमने ये देखा कि इसमें किस तरीके से हम आईपी और ईएसपी वगैरह का हेडर ऐड कर सकते हैं। So, IPsec uses the security protocols to provide desired security services. These protocols are the heart of IPsec operations, and everything else is dependent on the support of these protocols in IPsec. आपने देखा कि जब भी मैंने ये बात की टनल मोड हो या ट्रांसपोर्ट मोड हो, वहाँ पर जो एक हेडर ऐड हो रहा था वो या तो ESP का ऐड हो रहा था या AH का ऐड हो रहा था। इसका मतलब ये है कि सारा काम जो है वो इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स यानी सब प्रोटोकॉल्स नहीं करना है। और साथ ही साथ एक और वहाँ पे टर्म आपको मैंने डिस्कस की थी, दैट वाज सिक्योरिटी एसोसिएशन, एसएस, जो आज हम देखेंगे भी कि क्या होती है। एसएस बिटवीन द कम्युनिकेशन एंट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज्ड। सो दो प्रोटोकॉल है, वन इज एएच एंड अदर इज ईएसपी। लेट्स डिस्कस कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रोटोकॉल है उसका नाम है आईपी सिक्योरिटी के अंदर ऑथेंटिकेशन हेडर। The Authentication Header protocol provides the services of data integrity and origin authentication. So आप देखिए पहली चीज जो इंश्योर कर रहा है ये जो हमारा सब प्रोटोकॉल है वो है डेटा की इंटेग्रिटी। अगली ही चीज अगर आप देखें तो वो ओरिजिन ऑथेंटिकेशन है, यानी नोड जहां से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना शुरू हुई है या गेटवे जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना शुरू हुई है उसकी ऑथेंटिकेशन भी ये कर पाएगा। It optionally caters for message replay resistance. However, it does not provide any form of confidentiality. So this is the limitation of authentication header.
यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करता. इट प्रोवाइड्स authentication of either all or part of the contents of the datagram by by the addition of a header. So header ऐड होगा जिसकी वजह से authentication जो है वो भी जो है प्रोवाइड की जा सकती है. The header is calculated based on the datagram, which parts of the datagram are used to calculate, and where to place the header depends on the mode of operation that you are using, tunnel mode or transport mode. So जिस तरह से मैंने आपको पिछले भी जो हमारा लेक्चर था उसमें ये बताया था कि जो हमारा टनल मोड होता है उसमें आईपी के 2 हेडर इस्तेमाल होते हैं और ट्रांसपोर्ट के अंदर आईपी का एक हेडर इस्तेमाल होता है. तो अगेन जो डेटाग्राम की पूरी कैलकुलेशन है या प्लेसमेंट है वो इन मोड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि ऑथेंटिकेशन हेडर कहाँ पर यूज होना है, यानी कहाँ पर ऐड होना है. As well as it used to calculate checksum and perform CRC check for error detection. आपको ये फीचर याद होगा, डेटा लिंक लेयर में भी ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, CRC एंड checksum ऐड करना और for error detection and correction and prevention as well. So ये authentication header कर सकता है, यानी इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है. So जो चीजें अंडरलाइन है वो इम्पोर्टेंट है, डेटा इंटेग्रिटी, ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, रीप्ले, रेजिस्टेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन. सो ये जो सारी चीजें, सारी सर्विसेज हैं, ये इस हेडर के जरिए से हम ऐड कर सकते हैं. ऑथेंटिकेशन हेडर अब कैसे डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करता है. अब आपने जहां पे भी डेटा इंटेग्रिटी की बात सुननी है तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो हैशिंग एल्गोरिदम की बात हो रही है. तो ये भी जो हमारा मोड है या प्रोटोकॉल है ये स्पेशल हैशिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है एंड अ सीक्रेट की नॉन ओनली विद द कम्युनिकेशन पार्टी. तो इस तरीके से डेटा इंटेग्रिटी भी हो रही है, ओरिजिन ऑथेंटिकेशन भी जो है वो इससे अचीव हो रही है. A security association between two devices is set up that specifies these parameters. तो ये सारी चीजें जो है वो दो नोड्स जो है ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, साथ ही साथ एक्सचेंज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए जो उनके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनको वो भी मैनेज कर रहे हैं. The process of AH goes through the following phases. So देखेंगे इसमें हम क्या करते हैं. When IP packet is received from upper protocol stack, IP determine these associated assays from available information in the packet, for example, the IP address. From SA, once that is identified, the security protocol is AH, the parameters of AH are calculated. So देखें कि हमारे पास जो पूरा एक मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि पूरा हमारे पास सपोज हमारा जो हेडर है टीसीपी आईपी का वो चलता हुआ आ रहा है, उससे उसके वहां पर से कैलकुलेट करके ये देखा जाएगा कि जो आईपी सिक्योरिटी के लिए हमें कौन सा जो है वो हेडर इस्तेमाल करना है, एएच या ईएसपी, वो उसके अंदर लिखा हुआ होगा, उस हेडर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन ऐड होगी. उसको देखते हुए फिर हम जो है वो और ट्रांसपोर्ट और टनल मोड को देखते हुए हम इस हेडर को ऐड करेंगे. सो अभी आपके सामने जो एक पिक्चर नजर आ रही है ये कंप्लीट एएच हेडर है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ फील्ड्स हैं 0 to 31 यानी 32 बिट्स का हेडर होगा. इसमें सबसे पहले तो ये है कि इसमें कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए डेटा रिक्वायर होगा जिसकी लेंथ जो है वो वेरिएबल होगी. सीक्वेंस नंबर की फील्ड होगी कि किस कौन सा सीक्वेंस नंबर है इस पैकेट का. साथ ही साथ सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स भी मेंटेन हो रहा होगा, इसको भी हम देख लेते हैं अगली स्लाइड के अंदर. नेक्स्ट हेडर की इंफॉर्मेशन होगी और पेलोड लेंथ. पेलोड लेंथ यानी इसके साथ जो एसोसिएटेड पूरा टीसीपी आईपी का हेडर प्लस जो ओरिजिनल डेटा अटैच किया गया है उसकी कितनी लेंथ है वो बिट्स यहाँ पे लिख दी जाएंगी. और ये कुछ रिजर्व है, अगर आपको मैसेज पैडिंग करनी है या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या एक्सचेंज करनी है तो उसके लिए भी ये जो हमारी रिजर्व फील्ड्स है वो काम करेंगी. So this is really simple header, don't have any complex information. Just this protocol is using the field sequence number and security parameter index and some data authentication relevant information.
सो व्हाट इज द एसपीआई? एसपीआई सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। हम इसके बारे में थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे जब हम एसएस की बात करेंगे। ये एक इंडेक्स है जो क्या करेगा, that is obtained from SA existing between communication parties। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी एक नोड है, सपोज ए, और दूसरा नोड है हमारे पास बी। इन दोनों के दरमियान में जो भी एसोसिएशन क्रिएट हुई है, डेवलप हुई है, उन एसोसिएशन के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, मैक एड्रेसेस हो सकते हैं, चैनल की राउटर इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो इस इंडेक्स में मेंटेन हो रहा होता है। Sequence number is calculated and inserted. These number provided optional capability to AH to resist the replay attack. That means के एक सीक्वेंस में पैकेट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर वही सीक्वेंस चल रहा। सपोज हमारे अगर 10 पैकेट्स बने हैं हमारी इंफॉर्मेशन के, तो पहला पैकेट है, फिर उसका सीक्वेंस नंबर 1 है, फिर 2 है, 3, इस तरह पैकेट्स बनते बनते इससे ये होगा कि हमारे पास जो एक तो अटैक से बच जाएंगे, दूसरा हमारा जो हम कोई सा भी मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद है कि मैंने एक आपको साइफर ब्लॉक चेनिंग के बारे में बताया था, या साइफर फीडबैक मोड था, या आउटपुट फीडबैक मोड था। हम इन सीक्वेंस के नंबर की मदद से अपने जो हमने कम्युनिकेशन करनी है, अपने मैसेज एक्सचेंज करने हैं, वो बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन डेटा जो कि वेरिएबल लेंथ का था इस हेडर के अंदर, दैट इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिकेशन मोड। इसीलिए आपने देखा कि उसके आगे वेरिएबल लिखा हुआ था। मैं दोबारा आपको वो हेडर दिखा देती हूँ। हमारे पास ऑथेंटिकेशन डेटा है, सीक्वेंस नंबर की फील्ड है 1257 एनी नंबर, जो भी हमारा चल रहा है, हमारे पैकेट्स के नंबर है। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है जिसमें एसएस की इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है कि उसका जो हमारे जो एसएस या सिक्योरिटी एसोसिएशंस हैं वो कैसे मेंटेन हो रही है, कहाँ से कहाँ तक जो है वो डेटा जाना है। नेक्स्ट हेडर की वैल्यू क्या, सपोज यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे मे बी 8 लिखा जाए। पेलोड की लेंथ क्या है, यानी जो ऑथेंटिकेशन हेडर लगा गया आईपी के साथ, टीसीपी आईपी के साथ, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, और रिजर्व फील्ड्स भी यहाँ पर आपको दी गई है। अब हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है। हमारे पास एक ओरिजिनल आईपी डेटाग्राम है जिसके अंदर हमारे पास ये अदर हेडर्स एंड पेलोड, यानी कि आप समझेंगे हमारे पास सपोज एक कुछ ओरिजिनल डेटा है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सपोज हमारा जो डेटा था ओरिजिनल वो इतने साइज का है, और उसके जो है वो 5 या 6 पैकेट्स बने हुए हैं। सपोज इसको मैं मैसेज की शक्ल में ही लिख देती हूँ ताकि आपको अपने जहन में ये महफूज हो जाए। अब आपको पता है कि हमारे पास इसमें 7 लेयर्स टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट की लगी हुई है, डिफरेंट हेडर्स लगे हुए हैं। तो हमने इसको इस तरह से पूरे पैकेट्स जो है वो क्रिएट किए हुए हैं, और इसी इसके साथ ही साथ जब टीसीपी का पूरा जो आईपी का हेडर भी इसके साथ अटैच किया गया है। तो अगर मैं इसको इस पैकेट को इस तरीके से ड्रॉ करूं कि मेरे पास एक मैसेज है, मैसेज के साथ ही मेरे पास जो है वो आईपी का हेडर है। ये मैसेज है, मैसेज के साथ टीसीपी का हेडर है, और ये मेरे पास आईपी, इसको मैं टी लिख देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आईपी लिख देती हूँ। आईपी का हेडर जो है वो लिंक किया गया, अटैच किया गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर इस पैकेट के ऊपर ऑथेंटिकेशन हेडर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा ये पैकेट जो होगा इसको हैश फंक्शन से हम गुजारेंगे। ये एक हैश फंक्शन, ये हैश का सिंबल आपको नजर आ रहा है, MD5 पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। Digital signature provided by a MAC, that is method authentication code, by using the MD5 or SHA1. And we can use a secret key information to encrypt this whole data, and we have a new encrypted field of this data. अब हमारे पास हम दो चीजें करेंगे। एक तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा है यानी आईपीटी और ये वाला पूरा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें जो ऑथेंटिकेशन हेडर की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फील्ड्स बताई हैं, यानी सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, सीक्वेंस नंबर एंड ऑथेंटिकेशन डेटा, और पूरी पेलोड लेंथ। पेलोड लेंथ का मतलब यही वाला था कि ये वाली जितनी भी बिट्स हैं वो कितनी है, वो सारा इसमें जो भी कैलकुल बनेगा हेडर, उसको भी उसमें से कुछ पार्ट्स को भी इस फील्ड में या इस हैश फंक्शन में से गुजारा जाएगा, ताकि जो है हमारे पास एक प्योर ऑथेंटिकेशन हेडर क्रिएट हो जाए। और इसके साथ हमारे पास जो ओरिजिनल आईपी हेडर है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं इसमें कुछ और भी सिक्योरिटी फीचर हम ऐड कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स एक और ड्राइंग आपके सामने है। इसमें अगर हम जो है टनल मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें दो हेडर्स की जरूरत पड़ेगी, एक आईपी का हेडर नया वाला और एक पुराने वाला। यहाँ पे बाकी सारी चीजें वही है, यानी आप देख रहे हैं कि अदर हेडर्स एंड पेलोड है, ओरिजिनल आईपी का हेडर है, ऑथेंटिकेशन हेडर है। अगेन वो सारी इंफॉर्मेशन आप देखें, ये जो हैश में वैल्यू में जो फंक्शन है उसमें क्या क्या चीजें जा रही है। एक तो आपका पूरा ओरिजिनल डेटा विद टीसीपी हेडर, विद आईपी ओरिजिनल आईपी हेडर, विद न्यू आईपी हेडर, और ये सारी इंफॉर्मेशन जिसमें से कुछ फील्ड्स न्यू म्यूटेबल फील्ड्स जो है, नॉन म्यूटेबल फील्ड्स इसके अंदर ऐड हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन हेडर की भी कुछ पार्ट्स जो है वो इस फंक्शन में ऐड होके फिर इस जगह पर इसको प्लेस किया जा रहा है। सो ये हमें क्लियर हो गया कि अगर हम ट्रांसपोर्ट मोड में हैं तो वी हैव ओनली वन आईपी हेडर और उसके बाद ऑथेंटिकेशन हेडर आ जाता है। लेकिन अगर हम टनलिंग मोड में है तो हमारे पास दो आईपी के हेडर्स जो है वो इस तरीके से इस्तेमाल होंगे। तो चाहे वो ऑथेंटिकेशन हेडर हो या ईएसपी हो, हमें इसको अपने जहन में रखना है। सो स्टूडेंट सेकंड जो सेकंड प्रोटोकॉल है हमारे पास वो है ईएसपी, दैट इज इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल अब ऑथेंटिकेशन हेडर में तो बहुत ही कम फील्ड्स हैं। एक उसमें कुछ चीजें हमने देखी कि वो इंटेग्रिटी भी कर रहा है, ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन भी कर रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो ये एक दूसरा प्रोटोकॉल है जो इसका काम क्या है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ओरिजिनल ऑथेंटिकेशन एज वेल एज ऑप्शनल रीप्ले रेजिस्टेंस भी इसके अंदर मौजूद है। The set of services provided depends on options selected at the time of security association establishment. In ESP algorithms used for encryption and generating authenticated by determined by the attributes used to create the essays. तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी essays का जिक्र हुआ, यहाँ पे भी essay का जिक्र हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी एसोसिएशन है इससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दोनों प्रोटोकॉल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हमें इंक्रिप्शन के लिए भी और ऑथेंटिकेशन के लिए भी चाहिए होगी, जो हम इसमें मेंटेन कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, ईएसपी का बिहेवियर कैसा है अगर हम टनल और ट्रांसपोर्ट मोड में काम कर रहे हैं। ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल में हमारे पास डेटा है, टीसीपी का हेडर है और ओरिजिनल आईपी हेडर है। आईपी वेरिएंट 4 की एग्जांपल ये बताई जा रही है आपको। अगर ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर है हम, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा है, देन आई हैव टीसीपी हेडर, देन आई हैव ESP हेडर। आपको याद है कि ऑथेंटिकेशन के टाइम पे यहाँ AH हेडर था, यहाँ पर अब ESP हेडर है और यहाँ पे ESP ट्रेलर है और ESP ऑथेंटिकेशन डाल दी गई है। और जो हमारे पास ओरिजिनल आईपी हेडर है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट मोड में वी हैव ओनली वन आईपी हेडर, but in tunneling mode you can see that either we are using ESP or authentication header. We can see here that tunnel mode, in tunnel mode we have two headers. One is the new IP header and the original IP header, and same we are using ESP header here and ESP trailer and ESP authentication and information here. So ये दोनों हमें पैकेट से ये समझ आती है कि ESP का header जो है वो ऐड किया जाएगा between the two different headers, TCP or original IP header, or new IP header or original IP header. So that complete information is authenticated and encrypted. And if we discuss that, if we talk about the transport mode feature, that is good for host-to-host traffic, but for the tunneling mode, we have a large and broader way to communication where we can create the VPNs. We can add the not only host to host or host to gateway communication, either we can add the gateway to gateway security as well. So let's discuss that what is the ESP header and what are different header options here. It is 32-bit packet similar to the AH, and if we have authentication data, we have some padding width where we can add the padding length. जितनी भी हमने 5, 7, 8 बिट ऐड किए वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हेडर की इंफॉर्मेशन होगी और ये हमें कैसे पता चलेगी, ये हमें सीक्वेंस नंबर से पता चल जाएगी।
इसी तरह हमारे पास encrypted payload है, अगेन ये वेरिएबल लेंथ का है, और हमारे पास सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है और सीक्वेंस नंबर है। तो पहला स्टेप क्या है? once it is determined that the ESP is involved, the fields of ESP packets are calculated. Then encryption and authentication process in transport mode. Same process आपने देखा, तमाम payload, ESP trailer, this complete data with the secret key information is added into the hash function or any encryption algorithm. You can see here that the test is being used with the CBC, that is cipher blockchaining. And this encrypted information, after this encrypted information, the ESP header has been added with the original IP header. And ESP authentication, ES plus ESP trailer with other headers and payload, and ESP header with the original IP header is added. If we are in a transport mode, there is only one IP header that is being used. And if we are in tunneling mode, we have a complete datagram along with the information of IP header and payload and ESP trailer padding with the secret key encryption, and this whole encrypted field is then added by the ESP header, and a new IP header has been added. So this whole packet from ESP header to ESP trailer is encrypted and hashed, and as well as it adds the complete security encapsulation for the security. So students, last but not the least topic associated with the IPSec, that is security association. हम बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि secure ESP हो या AH हो, दोनों के लिए हमें security association चाहिए होगी, और security association के लिए we need to prepare an index that is called the SPI. So let's discuss that what is the security association. Before sending data, a virtual connection is established between the sending entity and receiving entity called security association. So हमें हमें ये पता चला कि ये एक virtual connection है. Virtual connection, जैसा कि VPN के अंदर भी virtual connection होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक virtual connection build करना है. अभी जो virtual connection है, इसकी कुछ properties होंगी. IP security provides many options for performing network encryption and authentication. Each IP security connection can provide encryption, integrity, and authentication, or all the three services. So virtual connection के लिए जो connection build किया जाएगा वो एक तो highly encrypted, highly secure with authentication and integrity, ये प्रोवाइड किया जाएगा. When the security services is determined, यानी कि पहले जब वो channel create हो गया है, the two IP security peer entities must determine exactly which algorithm to use for data exchange. For example, if we are using DES or 3DES or MD5 or SHA1 or SH512 for integrity, or whatever we are using, and whatever kind of keys we are using. After deciding the algorithms, the two devices must share session keys. So this is the next major task in during the security association. Not only providing the security as well as sharing of information between two peers in highly secure environment. SA is a set of above communication parties that provides the relationship between two or more systems to build an IPsec section. SA is simple in nature, and हमें ये बात पता है कि we need bi-directional communication. If both parties wants to communicate, that means A to B communication should be enabled, and security association should be enabled, and B to A security association should be enabled. And this will bring up with the idea of using this secure tunnel for bidirectional association. Assays are identified by SPIs, that is security parameter index number, that exist in the security protocol header. हमने ये जिक्र किया था, either we are using AH or ESP. In both headers, there is a complete section for SPI.
Both sending and receiving entities maintain state information about the assay. It is similar to TCP endpoints, which also maintain state information. So IPsec is a connection-oriented like TCP. So these all are the important concerns associated with the assays used in IPsec protocol. So let's see that what are different parameters of assay. There are three different parameters. One is the SPI, as we already have discussed, the destination IP address and the security protocol identifier. ये सिक्योरिटी की जब एसोसिएशन क्रिएट हो रही है, यानी एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो हमें ये तीन चीजें जो है वो चाहिए होंगी. पहली चीज है जी सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स. इट इज अ 32-bit value assigned to SA, and it is used to distinguish among different assays terminating at the same destination and same IPsec protocol. So आप समझें कि ये एक ऐसा इंडेक्स प्रिपेयर हो रहा है जिसके अंदर जितने भी नोड्स आपस में लिंक हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी, और कौन कौन से आईपी सिक्योरिटी के पैकेट्स गुजर रहे हैं आपकी मशीन से आपके नोड में, उनकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन की जाएगी. एवरी पैकेट ऑफ IPsec carries a header containing the SPI field, and the SPI is provided to map the incoming packet of an assay. The SPI is a random number generated by the sender to identify the assays to the recipient. So let's explain or try to understand it by this scenario that we have two devices, that is IPsec aware router R1 and we have R2 with the same properties, and both have IP addresses like 40.168.2.92, and this router has 200.68.4.22, and we have a tunnel here and we have a security association here where the information is being exchanged and shared in a secure environment. So what RA stores for SA? अब देखिए ये जो RA का है मेरे पास, RA क्या क्या स्टोर करेगा. नंबर 1, 32-bit identifier of SA, यानी SPI मेंटेन करेगा. Original SA interface, that is the IP address of this router यानी R1, and destination ऐसे इंटरफेस यानी जहां पर यहाँ से इंफॉर्मेशन पहुंचनी है उसका IP एड्रेस. टाइप ऑफ इंक्रिप्शन यूज्ड, से 3 DES with CBC encryption key. Type of integrity check used, say HMAC with MD5 or any other SHA1 or SHA512, and authentication key. So ये सारी जो चीजें हैं वो हर एक राउटर मेंटेन करेगा, हर एक नोड मेंटेन करेगा जो भी IPsec कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जब भी IPsec कम्युनिकेशन इस्तेमाल होगी तो वहां पर एक वर्चुअल कनेक्शन क्रिएट होगा जिसको हम सिक्योरिटी एसोसिएशन कहते हैं. So students, that is the end of IP security protocol. So let's conclude it. हमने क्या क्या देखा, हमने ये पढ़ा कि IP जो sec हमारे पास प्रोटोकॉल है, let me write it for you. IPsec जो प्रोटोकॉल है हमारे पास, उसमें हमारे पास उसके दो मोड होते हैं. एक का नाम था टनल मोड, दूसरे का नाम था ट्रांसपोर्ट मोड. फिर हमने ये देखा कि आईपी सिक्योरिटी के दो जो है वो सब प्रोटोकॉल है, एक का नाम है AH और दूसरे का नाम है ESP. और इसी से रेलेवेंट एक इंफॉर्मेशन आपको और बताई गई, वो थी SA की, दैट इज सिक्योरिटी एसोसिएशन. Moreover, what are the different basic need and use of IP security protocol? That was IKE, that is Internet Key Exchange, and IPsec communication. IPsec communication यानी दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है. So ये इसका कंक्लूजन है कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर क्या फील्ड्स होती हैं, ESP के अंदर क्या फील्ड होती हैं, और ये जो चारों कॉम्बिनेशन है यानी टनल विद AH, टनल विद ESP, यानी मैं यहाँ पर अगर ये लिखूं कि हम टनल मोड के अंदर भी ESP इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसमें ऑथेंटिकेशन हेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली हम ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ESP
प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम ऑथेंटिकेशन हेडर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस ही हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन टनल मोड की प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर हम कॉन्फिडेंशियलिटी ऐड नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, दैट इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। आप लोगों को अब तीनों लेयर्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि तीनों लेयर्स पे कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, और अब आपको कंप्लीट आइडिया हो क्या होगा कि हम हर लेयर के ऊपर सिक्योरिटी एनेबल कर सकते हैं अदर देन द डेटा इंक्रिप्शन, अदर देन द TCP and IP header. So thank you very much students for listening this session.